Okay, we'll see this homework problem first. What is the answer? Okay, answer of this question is 30. How to do? First, we'll find out the distance covered in one reflection, this distance. Okay, if this is 30, this will also be 30 and this is y. ये distance दिया है y हमें, तो x मिल जाएगा 10. 30 is equal to x upon y. Y given is 0.2, so x की value 0.2 by 1 by √3. तो अभी total distance दिया है 2√3. इसको x से divide कर देंगे तो we'll get the total number of reflections. So let's see. Tan theta is equal to y by x, x by y, sorry. Like this, here theta, which will be 30 only. This is x, this is y. So we got x here, and number of reflections will be calculated by total distance divided by x. So after calculation, we get 30. 30 is the right answer. All right. Now, see further. This was the question given. Previous to that, we have seen if we rotate the mirror by angle theta, reflected ray will turn by 2 theta, provided incident ray is fixed. So based on that, this question is there. Light incident normally on the plane mirror attached to the galvanometer coil retraces backward as shown. Retraces वापस आ जाती है as shown in this figure. Current in the coil produces deflection of 3.5 degree. Deflection of 3.5 degree of mirror. Mirror इधर turn हो जाता है 3.5 degree. तो ये जो ray होगी, this will turn by 2 theta. That will be 2 theta means 7 degree. 7 degree को pi by 180 से multiply करके radian में convert कर लेंगे. Now since angle is small, we can use 2 theta is equal to arc upon radius. D will be arc and this distance will be equal to radius 1.5. So 2 theta is equal to D upon 1.5 cross multiplied and we'll get 0.18. ये distance 0.18 हो जाएगा meter. All right. Mirror turning by 3.5 degree, ray will turn by double 7 degree and converting it into the radian by multiplying by pi by 180 using the angle is equal to arc upon radius. This will be arc for a small angle, this will act as the arc and this will act as a radius. Got it? 0.18 meter is the answer. Now, if I ask you the question, if mirror is up to here, object is kept here, will there be image formation? Answer is yes, where it will be same rule, extend the mirror at same distance. Whether this object can see its own image? No, because mirror is not there. So who can see the image? We have to make the diagram and see. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सटेंड किया हमने और ये one ray we are taking at the lower edge of the mirror. Law of reflections it will turn, and other ray we are taking at the upper edge of the mirror. इधर turn हो जाएगी. इसको इधर extend किया. Here is the image formation, and this space is called field of view. यहाँ पर those who are present in this space can see the image only. यहाँ पे कोई है तो he cannot see because he should be in this field of view to see the image. Object cannot see its own image, but those who are present this side can see image of this object. ऐसा में दिखता है रूम में, suppose if we are
in any room, mirror is on one side, so we can see the objects of other side, है ना? मिरर सामने नहीं है तो दूसरी साइड के ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं. हम यहाँ पे बैठे हैं, इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें दिखेगा, वो इधर यहाँ कहीं पे दिखेगा ऐसा, एट सेम डिस्टेंस हियर कहीं, so we can see through this, है ना, like this. All right, so field of view we can call it this space जहाँ से इमेज नजर आती है. All right, these points we can name. Now we can see real and virtual image and object. तो देखते हैं, suppose this is a plane mirror and this is the object kept, say small light bulb है, इसकी image कैसे बनेगी? इस साइड में virtual image we call it. One ray will go like this, it will turn back 90 degree पे. Other ray we can take this normal के साथ same angle, इसको extend किया इधर, यहाँ पे intersection one more ray we can take it इधर, तो यहाँ पे intersection of these three rays will give us the image. We call it virtual image. Why? Because actual rays are this side rays are not there. So virtual image means observer can see it directly. यहाँ पे जो observer है, he can see the image directly, but this image cannot be shown on the screen or white paper. यहाँ पे अगर आप पेपर रख दो या white screen डाल दो तो यहाँ पर it cannot be shown. So virtual image is image which cannot be shown on the screen but can be seen directly. हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं हमें अपनी इमेज दिखाई पड़ती है इधर, but we cannot show it behind the mirror. If you want to show it, put the screen there, your image will not come, directly can be seen. So if the rays are diverging out on the same side, so then image will be virtual backside. अगर रेज इस तरफ इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, जैसा कि कॉनकेव मिरर में होता है. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर इज मेकिंग virtual image of the real object. यहाँ पे real object. All right. Now second situation we see. Suppose these two rays are converging at point P. किसी point पर किसी point पर converge हो रही थी, point P are not mentioning in the name. If you put the mirror here, these rays will, according to law of reflection, they will come here. यहाँ भी law of reflection है, यहाँ पे image बन जाएगी. Now this point will act as a object and here it will be image. ठीक है, तो this will act as a virtual object. यहाँ पे object नहीं रखा है, but rays were coming here. जिस point पे converge कर रही थी, it will be called virtual object और उसकी image यहाँ बनेगी real image. तो what is actually happening? इसको देखो कैसे समझ सकते हैं. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लो, बल्ब ले लो, पॉइंट छोटा सा बल्ब ले लो, सामने मिरर, सामने लेंस रख दो. ठीक है, यहाँ से रेज ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे उसकी इमेज बनाएंगे. ठीक है, बल्ब की इमेज बनेगी, यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बाय दिस लेंस. ठीक है, तो अभी आपने मिरर रख दिया. नाउ जो रियल इमेज थी, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसकी इमेज थी ये. दिस रियल इमेज नाउ विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर और उसकी इमेज रियल इमेज यहाँ पे बल्ब आपको दिखेगा, बल्ब की जो इमेज है यहाँ पे दिखेगी. इफ यू पुट द पेपर हियर, यहाँ पर व्हाइट पेपर या व्हाइट स्क्रीन पुट कर देंगे, यहाँ पे बल्ब की इमेज आएगी. और यू कैन कीप इट कैंडल हियर, ये कैंडल है, उसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी आपको. That's how this will be virtual object and its real image will be here. Actual object यहाँ पर है ना. इस मिरर के लिए इसकी ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज है ये, बट इस मिरर के लिए इट इज एक्टिंग एज ए ऑब्जेक्ट एंड उसकी इमेज यहाँ बन रही.
क्लियर? दैट ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है कन्वर्जिंग रेस से बनता है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, यहाँ पे लिखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग रेस. कन्वर्जिंग रेस थी, उसके पहले हमने प्लेन मिरर रख दिया, या कैन आर यू कैन कीप इट कॉनकेव मिरर, or you can keep it convex mirror, or you can put it another lens रखेंगे. तो image may not be this side, it may be this side or maybe this side. We can't say which kind of lens you are keeping here. Depending upon the lens you are keeping here, final image can be this side or this side. So in place of mirror, lenses, other lens can be kept here. That's how virtual objects are formed. In fact, they are the real image of some other object kept somewhere else. Okay. For this mirror, they will act as the object, and उसकी image इधर आ जाएगी. All right, चलो आगे देखेंगे. Now we are seeing the spherical mirrors. Spherical mirrors are used in various purposes, like concave mirror is used in the telescope, and convex mirror is used for rear view mirror. Okay. Concave mirror is also called converging, because parallel rays coming here will be converging toward the focal point, ऐसे converge हो जाएंगी. Or this is called diverging, because parallel rays will be diverging out as if they are coming from the focal point, as if they are coming from particular point, which is called focal point in this case. And यहाँ पे focal point इधर होता है. We'll define the focal point. Other terms पहले सीखेंगे. Midpoint of the mirror is called pole. Mirror का ये side view है. Mirror का जो one edge is visible. अगर आप सामने से देखेंगे mirror आपको round ऐसे दिखेगा, circular. ये midpoint होगा, which is called pole. See the center of curvature. Center of curvature is the center of the sphere from which mirrors are cut out. ये hollow sphere है गिलास का, उसमें से आपने कट कर दिया इतना पार्ट, और इसमें सामने की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी, इसमें इधर से कट किया ऐसे, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे आपने प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दी. एंड पी एंड सी को ज्वाइन करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस. डायमीटर ए बी इज कॉल्ड aperture, and PC is called radius of curvature is equal to R. Paraxial rays क्या होती है? Rays close to the principal axis are called paraxial rays. और marginal rays कौन सी होंगी? ये H पर जो होंगी, principal axis से दूर वाली marginal rays. Rays away from the principal axis is called marginal rays. But in our course, since diameter is small, ये जो diameter होगा aperture, small aperture है, lab में maybe 2-3 inches, 4 inches, 5 inches, so all the rays will be marginal. Sorry, all the rays will be paraxial. But in telescope, we use this mirror of 2 meters or 2.5 meters big. In that cases, the rays away from the principal axis will be called marginal rays. But in lab, whatever the lenses mirrors are available, सबके लिए पैराक्सियल रेज, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी स्मॉल. यहाँ पे देखो ये एंगल छोटे होंगे, फॉर विच एंगल्स आर स्मॉल. तो जितने भी डेरिवेशन है इन अवर कोर्स, ऑल आर डन बाय द मार्जिनल रेज एंड विद द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. हाउ डू वी डिफाइन द फोकल पॉइंट? फोकल पॉइंट पैरेलल रेज से डिफाइन की जाती है. पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग at the what point they will meet is called focal point in case of concave mirror, and in case of convex, parallel rays after reflecting appears to come from which point is called focal point. यहाँ से आती है, दिख रही है ऐसे. Parallel rays से focal point is defined and focal length will be equal to PF. यहाँ पे इतना, यहाँ पे
So these are the terminologies we are going to use in the spherical mirrors. All right. Now we can see we have to prove focal length is half of the radius of curvature for spherical mirrors. तो देखिए ये कॉन्केव लिया मिरर हमने, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, बिकॉज ये स्फीयर का जो सेंटर होता है पॉइंट सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करें तो दैट इज नॉर्मल होगा, ठीक है, और ये टेंजेंट होती है ना ऐसे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये पैरेलल लाइन से अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे अगर ये देखो ये दोनों मिला के 2 थीटा हो रहा है तो ये भी अल्टरनेट एंगल 2 थीटा होगा। सेम थिंग हियर आल्सो, यहाँ पर भी ऐसे आएगा। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम टर्मिनोलॉजी इज देयर, either you take this diagram or this diagram, both will give you same result। तो इसमें देखो tan थीटा, यहाँ से देखो ये थीटा है तो tan थीटा विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट md अपॉन cd, ये cd, और tan 2 थीटा विल बी, ये 2 थीटा है, md अपॉन fd, ठीक है। तो सिंस एंगल्स आर स्मॉल तो tan एंगल छोटे होते tan छूट जाता है, तो थीटा विल बी, ये tan हट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये भी tan हट जाएगा तो ये आ जाएगा। ना ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो उठा के, विच इज 2 इंटू ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये नीचे देख सकते हैं md इंटू सी, md बाई सी डी, एंड ये एज इट इज, यहाँ से md कैंसिल हो गया, 2 अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी। सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, ये थीटा बहुत छोटा है तो डी विल बी वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, डी बहुत पॉइंट पी के पास होगा, ऑलमोस्ट बोथ विल बी वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमली क्लोज होंगे, डी विल बी टचिंग द पॉइंट पी। तो इसका मतलब फिर ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस आर हो जाएगी, ये डिस्टेंस एफ हो जाएगी, तो वो पुट कर दिया हमने आर एंड एफ, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स, यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं, देखो सेम टर्मिनोलॉजी यूज की गई, tan थीटा विल बी md अपॉन cd। So you note down this. Now we can see the sign convention, very important sign convention. So first and important point is that point P, जो है center of the mirror, which is called pole, it will act as a reference point, or it will act as a origin. तो point P is origin, a reference point. यहाँ से we'll start our measurements. We can go this side or we can go this side, depending upon object किधर है, focal point किधर है ना। All the first point is all the distances are measured from the pole P, which act as the origin or reference point, or reference point. The second point is very important, that is the backbone of this sign convention. देखो incident ray ऐसे है, if starting from the pole you happen to move in the direction of incident rays, इधर कहीं सपोज इमेज यहाँ पे आई है कहीं पर, है ना, उसको लोकेट करने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रेस के अगेंस्ट में गए तो नेगेटिव। पोजीशंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस स्टार्टिंग फ्रॉम पोल आर पॉजिटिव, पोजीशंस अगेंस्ट द इंसिडेंट रेस आर नेगेटिव। इधर सपोज आपको फोकल पॉइंट लोकेट करना है तो इधर आना पड़ेगा, इसमें इंसिडेंट रेस ऐसे आ रही, अगेंस्ट में गए तो माइनस। इन अदर वर्ड्स मिरर के सामने का जो स्पेस है वो नेगेटिव होता है, मिरर के पीछे का स्पेस पॉजिटिव होता है, मतलब जिधर अपना रियल ऑब्जेक्ट होगा उस साइड का स्पेस नेगेटिव का, रेज इधर से आएंगे इंसिडेंट, हम अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट में माइनस, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस, तो मिरर के सामने का स्पेस नेगेटिव होगा, उधर अगर फोकल पॉइंट है तो माइनस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो माइनस लिखेंगे, जनरली ऑब्जेक्ट तो सामने ही होता है मिरर के, ऑब्जेक्ट पोजीशन माइनस आएगी,
रियल ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये देख लीजिए, the distances measured in the same direction as incident rays are taken positive, ये वाला, तो ये पॉजिटिव रहेंगे इधर देखो ये एरो लगा, and those measured in the direction opposite to the direction of incident light are taken negative, इधर की पोजीशंस माइनस रहेंगे क्योंकि इंसिडेंट रेस के अगेंस्ट में आ रहा है, और पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर्स आर नेगेटिव एंड बिहाइंड द मिरर्स आर पॉजिटिव, मिरर के पीछे का स्पेस पॉजिटिव, सामने का स्पेस नेगेटिव. This is the main. Same sign convention will be valid for the lenses also and for the curved refracting surfaces also. बस उसमें pole की जगह we call it optical center in case of lenses. Center of the lens is called optical center. Here it is called pole. Terms will be different, but sign convention remains same in the lens also. Now third point is easy. Distances upward are positive, downward are negative, whether they are in front of the mirror or behind the mirror. So third point is easy. Distances above the principal axis are positive and below it are negative. All right. So I'm closing here, and tomorrow we'll continue further points related to this. You just remember these are the important points. Sign convention you have to remember. Otherwise, the makers there will be problems. Clear? That's all. Thank you.